AI जो है ये buzzword भी है and the problems which you have raised, Dr. Kashif Ali, देखें AI जो है वो अभी तो फर्स्ट जनरेशन में है हमें इसकी. There are two next generations to come. And I'm very pleased that Dr. Nadeem ने जो comments दिए हैं, Dr. Nadeem से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है. ये मेरे स्टूडेंट थे 98 में थे कराची यूनिवर्सिटी में. So I'm very pleased to see that my students are now, mashallah, have grown up and have done the PhD in AI. AI can never take the place of human intelligence, that's for sure. एक बात आप ज़हन में रखें, there is a lot of apprehensions that perhaps in the third generation of AI, which is just about 3 or 4 years away from today, maybe earlier, that people think that perhaps AI will take over human intelligence. But this will never happen, I can tell you. This is against the nature, you know. वो जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में जो खालिक है वो मालिक है, you know. So Allah has created this universe and we are His creations. So creations cannot take the place of a creator. Similarly, people are apprehended that perhaps tomorrow in the third generation of AI, robots will drive us. No, it will not be the case. AI will always remain the subset of HI. HI will always be superior. And I can tell you, I can give you many examples of it. जो सबसे बड़ा important part है, जो हमें inculcate करना है हमारी पूरी generations को हमारे education system में, वो है कि AI का use करें मगर misuse ना करें, ठीक है? It was very deliberated yesterday in the about 3 hours long discussions among the other speakers came from UK, US, and so what is needed today, and that is missing in the developed countries as well. Okay, first we have to teach our students about the ethical practices. Although it is always required, but now after the advancement of AI, it is very important that all our students at undergrad level or even lower than at the college level as well, we should teach the ethical values, ethical practices and everything. Because there are many places in which you can do the manipulations in AI. When you implement AI, there are various stages. जैसे डॉक्टर नदीम ने कहा डेटा है, एल्गोरिदम है और ट्रेनिंग है. ये उसके इम्प्लीमेंटेशन के फेजेस हैं और यहाँ पर आप बाइसेस क्रिएट कर सकते हैं. डेटा में भी बाइसेस हो सकता है, एल्गोरिदम में बाइसेस हो सकता है, आपकी ट्रेनिंग में बाइसेस हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दोज बाइसेस you're going to get the lot of ethical issues, you know, several issues, ethical issues होंगे. तो बाइसिंग जहाँ भी होगी, and you know, unfortunately in our system, in our country, people try to find the shortcuts, people try to find the way which is not considered to be the natural way of progressing or natural way of advancement, but they find the shortcuts. And because of that, I am afraid that if we do not train our students about the basic ethics and basic values, then I am afraid that perhaps AI will going to create the disaster for all of us. I can give you one example. For example, automobile. Suppose people are the industries, automobile industries are now designing driverless car, autonomous car. Now in the case of autonomous car, if suppose any severe accident happens or a crash condition, what we say, so who will be the priority? Will it save the passengers or will it save the pedestrians? This is an ethical issue, So I have a list of hundreds of such areas where if we are not ethical, so it is going to bring the disaster. Same in research, same in everywhere, Use of AI and depending on AI are two different things. For example, I can tell you that our forefathers,
30-40 years ago when there were no calculators. They were using the mind, their mind skills, their natural skills to do the basic calculations. Now, after the calculators are with us, so for a very simple calculations, we use the calculators. So by doing this, we have lost our mental skills or our natural skills. So if we keep on depending AI that much, so definitely we'll be going to lose our natural skills. Okay? And I think that I can talk a lot on this, but one thing that may be interested for you all people, आप लोगों ने वो आजकल कोई सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करना होता है या कोई, तो उसमें एक आप टेबल यूज़ करते हैं, इसमें वो रोड्स की कंडीशंस और सारा दिया हुआ होता है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड दिस? आई थिंक एवरीबडी. उसमें उसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ब्रिजेस कहाँ हैं, तो उसको आप क्लिक करें तो वो आप वेरीफाई हो जाते हैं, या क्रॉस रोड्स कहाँ पर हैं, या व्हीकल्स, बड़ी व्हीकल्स कहाँ पर हैं. तो आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ ये रोड्स और ये व्हीकल्स और ये क्यों होता है, और तस्वीरें क्यों नहीं आती इसमें? एनीबडी मे हैव अ वेरी गुड आंसर. वेरी इट्स अ न्यू थिंग विच आई ऑल्सो हैव कम टू नो रिसेंटली. क्या चीज़ है वो? ये जो आ रही है स्क्वायर बने हुए आते हैं कि इन ऑर्डर टू वेरीफाई योर सेल्फ यू हैव टू क्लिक द क्वेश्चन, find the crossroads in the blocks, and then you have supposed to tick that. And by the way, no, I am just asking कि what is the logic behind it. And वो कैप्चा जो होता है जिसको आप वेरीफाई करते हैं, इट्स इज इंटरेस्ट फॉर ऑल ऑफ द ऑडियंस हियर. ये एक्चुअली प्रोजेक्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यूएसए का, कि दे आर ट्रेनिंग देयर मशीन्स विद योर डेटा. ये बिलियंस ऑफ लोग डेली जो है वेरीफाई करते हैं क्रॉस रोड कौन सा है, ब्रिजेस कौन से हैं. तो एक्चुअली वो जो एआई बेस्ड मोटर व्हीकल बनाना चाहते हैं, उससे उसको आपके डेटा के ज़रिए दे आर ट्रेनिंग देयर मशीन, दे आर ट्रेनिंग देयर सिस्टम. सो दिस इज़ वन थिंग. एंड इन द थर्ड जनरेशन मे बी 2-3 years later when AI driven car will be available. But certainly in Pakistani condition, like you said, वहाँ पर तो कैप्चा में वो सड़कें टूटी हुई भी दिखानी चाहिए कि where you find this broken streets and everything. तो हमारे लिए वो कैप्चा नहीं है, वो कैप्चा एडवांस कंट्रीज़ के लिए है.